नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम eVidya चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लेकर हाजिर हैं अपना सहयोग सेशन, जिसमें हम बात करते हैं हमारे एडोलेसेंट्स की, खासकर उनकी जो मेंटल वेलबींग है, उनकी जो मेंटल वेलनेस है, उस पर आधारित हमारा ये सहयोग सेशन होता है। मनोदर्पण का ये एक हिस्सा है, एक पार्ट है, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक बहुत ही शानदार पहल है। आज भी हम एक खास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि एडोलेसेंस से ही जुड़ा हुआ है। आप भी हमारे इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन का हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़े। दो खास लोग हैं हमारे साथ जिनसे मैं आपका परिचय भी कराऊंगा। टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इन सहयोग सेशन इज एडोलेसेंस आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। दिस इज द टॉपिक ऑन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस सेशन. I would like to connect and invite on the screen Dr. M.S. Kariyappa sir from our Regional Institute of Education, Bhopal, NCERT. Dr. Kariyappa, namaskar and a very warm welcome in the session. Namaskar sir, thank you. And also we have as a practicing counselor, Mr. Nikhil Mishra has joined us. Mr. Nikhil, namaskar and a very warm welcome to you too. Thank you sir, and thank you so much for this warm welcome. Thank you. Okay, let's begin this session because we have hardly 20-22 minutes in this session. I'm sure ये बहुत important है कि हम इस पूरे समय का सदुपयोग करें. So straight away I would like to ask a first question from Dr. Kariyappa. Sir, would you please establish this subject as an introduction? What is it all about, and what is self-identity and role confusion? So followed by this question, if you answer it, that would be great for us. Sure sir. So good evening to Ananda. So when you talk about the developmental, psychological developmental stages of a students or a learner or a kid, is the adolescent periods plays a major role. So it is considered as a bridge of childhood to adulthood. So when we have a good bridge, means the bridge is going to be promoted in a good manner, automatically the rest of life is going to be play a good role. So here we would like to see that which is a psychosocial development of among the adolescent age. The Erik Erikson was clearly detailed, was explained, he was done an experiment and he was tried to give a more inputs in this. So we would like to see this. So what is exactly the identity? So everyone and every human being has trying for some kind of an identity. So without an identity, nothing is existing this. So everyone, either even animals too, is also trying in some other way. So right. Here if you see that what exactly here in a school context or in a mental well-being context, what identity play a major role here. So if you see that every individual's a sense of uniqueness or belongingness is going to be discussed here. So when you see that this stage is very essential and developing a sense of personal identity, which will continue for the rest of the life of a person. So in this teenage or in this a critical age will have plays a major role of an identification. So there are the many different kind of, many researchers have shown here, and means the intense or it is a strength or stable and strong sense of identity is associated with the mental well-being and mental health of among the learners. And if you continue a good socio-emotional relations with development, definitely it is going to become some kind of a positive development for the learners and we are further going to children. So this identity is a major important, and why it is so? Why? Because every student and every teenagers in this condition, when they are unable to go for, or when they are unable to understand that, or when they are failure to, or indirectly you can say that inability to achieve a sense of an identity, it goes a kind of a confusion, or it is kind of a role confusion. Automatically we can see that most of the students or most of these critical age are very challenging age of the human development will fail this thing. So the failure to establish an individual identity is separate from the family, and also we can see them, they have no peer relationship, or they do not have a further plans, maybe either educational plans or maybe any kind of an occupational plans. So such kind of failures we can see that. So compulsory, if a student want to holistic development or all-round development, so the psychosocial development will play a major role. So here the identity will be the most important role, and if identity is recognized or referred or
is noticed, automatically it is going to become a positive, or otherwise it will be a confusion. So this state of confusion will be the many different ways. So like we can see that we are unable to ensure that what a student is doing or what a learner is doing in that. So next we can see that it's kind of a drifting from job, or maybe really even they are going away from their one who relatives or maybe the who near ones. We can see that it's kind of a feeling of disappointment we can see among this condition. So this is, that's why we need to give a more priority for even identification. Even a small identification, small recognition is going to make a big meaning for their learning atmosphere, and to social involvement and emotional involvement and cognitive involvement. Such all these things, when you talk about an overall development, definitely these identities plays a major role. So we need to be minimize some kind of whatever the confusions are there among the learners will be help for the further development. Right, Yes, sir. right. Agreed, sir. Thank you very much for this clarification, and I must say this is the establishment of this session. Let's move ahead as we come to know about the role confusion and identity development. So, निखिल जी, आप practicing counselor हैं, I'm sure बच्चों के साथ आपका interaction होता होगा. तो जो एक आइडेंटिटी डेवलपमेंट की प्रोसेस है, उसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं, और जो रोल कन्फ्यूजन की यदि हम बात करें तो उसके जो कारण हैं वो बच्चों में क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं? जी सर, बिल्कुल। सर, इससे पहले हम इस फैक्टर को और ज़्यादा डीपली देखें या रोल कन्फ्यूजन के बारे में हम ज़्यादा जानें, तो देयर इज़ अ पिक्चर इन आवर पीपीटी। कैन वी हैव अ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? यस। सो सर, यहाँ पे दो डिफरेंट फैक्टर्स दिखा रहे हैं, दो डिफरेंट पिक्चर्स हैं, डिवीजन है। तो एक में जो स्टूडेंट है, लाइक दिस स्टेज, जैसे करियप्पा सर ने कहा, दिस एडोलेसेंस स्टेज इज अ डेवलपिंग स्टेज। यहाँ पे बच्चा एक्चुअल में एक्सप्लोर करता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है, अपने परसेप्शन से चीजें बनाने की कोशिश करता है। तो एक्चुअल में उसको यहाँ पे साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन के बीच में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किड जो है वो एक्चुअल में देख रहा है कि वो किसकी तरह दिखना चाहता है या किसकी तरह उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। सो वो अपने आप से पूछ रहा है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है वो एक्चुअल में सोसाइटी से ही ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो फेडिलिटी वर्ड जो यहाँ पे यूज किया गया वो एक्चुअल में ये दिखाता है सर कि बच्चा जो है वो एक्चुअल में सोसाइटी की तरह बनना चाहता है, सोसाइटी के नॉर्म्स की तरह बनना चाहता है, ताकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे। अनलेस एंड अनटिल उसकी आइडियोलॉजी, और हो सकता है उसकी सोसाइटी की आइडियोलॉजी डिफरेंट हो, बट वो सोसाइटी की तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है ताकि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे। सर, हम नेक्स्ट अगर स्लाइड पर जाएंगे तो हमें यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स दिखेंगे कि किस तरीके से आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है। सो आइडेंटिटी फॉर्मेशन एक्चुअल में, जैसे हम बात करते हैं कि सोशल रिलेशनशिप की, जब हम उस पर्टिकुलर स्लाइड में बात कर रहे थे, तो सोशल रिलेशनशिप में एक्चुअल में हमारे फ्रेंड्स को देख के हमारी आइडेंटिटी ब्लॉक होती है, फॉर्म होती है, कि हम हमारे दोस्तों को देख के हम देखते हैं कि किस तरीके से बनना चाहते हैं। अक्सर हम सर स्कूल में भी हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो उस ग्रुप के साथ ज्यादा जुड़ना चाहते हैं जिनके जो ग्रुप उनकी तरह होता है, या ग्रुप जो पॉपुलर होता है। तो फ्रेंड्स को देख के अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फैमिली कई बार बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर एम्पोज करने की कोशिश करती है। हम करियर के देखते हैं तो कई बार फैमिली हमें बोलती है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। तो ये जो है फैमिली एक तरह से आइडेंटिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसको फॉर्म करने का। स्कूल मेट्स, डेफिनेटली जब हम फ्रेंड्स की बात करते हैं तो सिमिलरली स्कूल मेट्स भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाते हैं। वेयर अदर सोशल ग्रुप जहाँ पे हम उठते बैठते हैं, कहीं भी अगर हम जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन को देखते हैं, उसकी तरह हमें बनने का बहुत मन करता है, तो कहीं ना कहीं वहां हमारी आइडेंटिटी फॉर्म करने में हेल्पफुल होती है। और जो सोशल ट्रेंड्स चले आ रहे हैं कि एक्चुअल में आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, अगर डॉक्टर का ट्रेंड चल रहा है तो सब डॉक्टर बनने लग जाएंगे। अगर इंजीनियर का ट्रेंड चल रहा है तो कल अगर आईएएस का ट्रेंड चल रहा है तो आईएएस की तरफ अपनी आइडेंटिटी को रुझान करने लग जाएंगे। तो जो ट्रेंड चलाता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कहीं हद तक आज के समय पे जो मीडिया है सर, हमारी सोशल मीडिया हो गए या हमारे न्यूज मीडिया हो गए, ये भी कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है बच्चों की। जब हम सर रोल कंफ्यूजन की जब बात करते हैं, विद द नेक्स्ट स्लाइड we can see that कि being unsure about what you are, who you are or where you fit, मतलब आप कहाँ हो, आप कौन हो, किस पर्टिकुलर चीज के लिए बने हो और कहाँ आप अच्छी तरीके से फिट होते हो, तो ये एक बहुत बड़ा जो कॉज है, ये आपको रोल कंफ्यूजन जो है कॉज बन जाता है इस चीज का।
एक जॉब पे आप एक जॉब से लेके अदर जॉब पे रेगुलरली शिफ्ट कर रहे हो, एक रिलेशनशिप से अदर रिलेशनशिप पे रेगुलरली शिफ्ट कर रहे हो आप, तो वो भी एक रोल कंफ्यूजन का एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। और आप जो जिस भी जगह पे हो उससे आप डिसअपॉइंटेड हो, उससे कंफ्यूज हो, आपको पसंद नहीं आ रही है वो जगह, और ये भी एक रोल कंफ्यूजन का एक बहुत बड़ा कॉज बन जाता है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने सर इस पर्टिकुलर पीपीटी में है, आई डोंट नो व्हाट आई वांटेड टू बी व्हेन आई ग्रो अप, इन द सेंस कि ये एक दिखा रहा है कि किस तरीके से एक बच्चा जो है वो क्या बनना चाहता है, वो किस जगह के लिए बना है उसको ये पता नहीं है, और ये लीड कर रहा है रोल कंफ्यूजन के लिए। तो अगर हम आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन की बात करें तो जिस तरीके से बच्चा अगर अपने आप की आइडेंटिटी फॉर्म करता है वो उतना ही ज्यादा रोल कंफ्यूजन से दूर रहेगा, और आइडेंटिटी फॉर्म करने पे वो हैप्पीनेस और जो मेंटल बीइंग की हम बात करते हैं वो उससे वेलफुल अवेयर हो पाएगा। बिल्कुल, मेंटल वेलबींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल वेलनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी हमारी ये सारी ज़रूरतें यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, और उनकी तरफ ध्यान देने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एज वी कम टू नो अबाउट दीज फैक्टर्स एंड the causes of the role confusion, let's move ahead in this session, and would like to ask another question from Dr. Kariyappa. Sir, as we discussed about this identity development and role confusion, so as we are discussing the subject adolescence, identity versus role confusion, so the question arises here, how these two words, identity versus role confusion, influences the mental well-being of our adolescents? Yes, sir. Yes, sir. Actually, when you talk about the well-being or wellness of the learner or a kid, or maybe any adolescent or teenagers, it's a big question. So, in what it is considered as the wellness for them? What exactly it is? So, like when we ask the question, who am I? So, when a student is having a confusion that who is, so even he is unable in a status, means he is unable to define himself what or herself what they are, either a student or maybe they are going to be in a future adult. Like that's why this stage is also earlier used to called as like a young woman and young man. Actually, when we start a responsibly, when you start thinking them, and we need to make a big role here. I think identity and role confusion plays a big influence to make a perfect citizen, or we can call it a civic citizen of India, or whatever it may be in that. So like if you see that here, what identity is going to be provided for us. So once if you think about it, what exactly it is going to talk about, so it make a structure of understanding who one is. So the first of all, to understand the selfness or uniqueness, who am I? So such answer will be clear when the student has an identity is created, or identity is prepared by him or by the parent and by the social human being and everybody. When they are going to get such kind of small recognition, there is some small appreciation is also be considered their identity for them. So such kind of things definitely will make them a more clarity about that. Next, when you talk about the directions, definitely this identity will make them to the values and goal clarifications. Surely, whatever they have a doubts, whatever they do not have a proper goals, so definitely this, when their identity is considered, or identity is more prepared, then automatically there is some clarity, even what we are expecting from some kind of values from them. So and also we can see that there is this stage is always want some kind of freedom, or some kind of they want to be some personal independence. So when we talk about that, even when you are able to, as a parent, as a school teacher, as a peer, or if you are able to identify them, automatically they will also have some personal control, and even they also have a feel that freedom. So when unnecessarily we should not control them with their freedom, or maybe we should not be against, or maybe we should be discourage them in some kind of, so this all be the negative leadings. So when you talk about the another one, most important is their potentialities. So we can see that there is what are the exact involvement. So we can see also this age is energetic age. So when you are feeling some kind of more energetic age, we need to be provide such kind of activities in school atmosphere. We should also encourage through the parents also. We should also get some kind of support from even peer group also is going to be play a major role to develop some psychosocial development among these. So like if you talk about this, what are the possibilities and what are the chances or what are the choices are there, we need to be define them. We need to be ask them to clear, or we need to be understand them oneself, then they go for further. So like if you see all these things, the emotional status or mental status,
or even social context or lifestyles of habit. When you come to some kind of lifestyle habits, so there is some physical structure or even a physical activities is also more important for them. Like a decision about their career or decision about their future, or maybe it might not be a career, it might be the further educational activities. So the identity is more recognized. For example, some students are unable to decide which subject they are favor or which subject they are going to be get more interested in that. So when they have such kind of ये सहयोग सेशन हमारा इस वक्त चल रहा था एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। दो बातें यहाँ पर समझ आती हैं कि कैसे मेंटल वेलबींग को हमें ठीक से रखना है। तमाम सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें पीयर प्रेशर भी हो सकता है। और यस डॉक्टर करियप्पा, कैन यू हियर मी? So we had these two panelists in this Sahyog session. I think there is some technical glitch जिससे कि हम नहीं लड़ सकते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है बीच में जब तमाम सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर करियप्पा, can you hear me now? Yes sir, I can hear you. Okay, please continue, sir. Yes, please continue. Yes sir. When you're talking about this, when we are continuing with the well-being things, so definitely we need to be recognize their potentialities, and even know if they have some kind of their drawbacks, we need to be recognized and should be corrected as a teachers, and we need to be provide such kind of activities, or we can need to be provide some kind of physical activities, mental activities, cognitive activities, whatever the requirement is there. When you think about the well-being of a learner, we need to be taken care by either a parent or a teacher or even a peer group people. So when you are able to do all these things, definitely confusion will be slowly disappear. So they will get a good clarity. Definitely they will try for their potential and they try for their well, in the sense indirectly, as they can do, or as they're going to be recognized in the future, or at what they're going to be expecting in a society, and what kind of recognition is required for as per their potential and what's for their capacity. Definitely everyone is going to be tried. So in such a way we can see that definitely a student want, or a learner, or adult want to be recognized, we should notice them. We should be make them very clear what they are. So that's sometime we need an hands of teacher, it needs of a parents also. So it may be the few percentage goes to the peer group. Peer group is also plays a major role. So we need to, that's why even our parents used to be always noticing us. So who is our friends, so what they are doing, like what kind of you have, what kind of belongingness you are having with them. So all these things will be worried. Why? Because there is a big influence of making a good mental health, or whatever the future decisions are depends on this psychosocial emotional development in this stage. Definitely this stage will be more and more critical. In the same way, we need to be bring out with the challengeable and inventable activities to the help of social means the well-being activities, of the mental well-being activities to provide in the school and parents and even parent groups. Sajji. Right. Thank you very much for sharing your thoughts and experience with us, and definitely it will help all the stakeholders of this session. हमारा ये जो सेशन है, अब हम बस अपने अंतिम पड़ाव की ओर हैं। तो निखिल जी से एक यहाँ पर सवाल कर लेते हैं। अभी एज वी हैव डिस्कस्ड द इश्यूज़, कुछ हमने फैक्टर्स भी जाने, कुछ हमने कारण भी जाने। हमारा जो मेन फ़र्ज़ है वो ये है कि कैसे हम उन्हें एक सोल्यूशन प्रोवाइड कराएं। सो द क्वेश्चन अराइजेस हियर फॉर फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, हाउ टू स्ट्रेंथन द आइडेंटिटी एंड श्रिंक द कन्फ्यूजन अमंग द एडोलेसेंट्स। कैसे आंसर करेंगे आप? डेफिनेटली सर, बट इससे पहले मैं छोटे से स्टेट्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगा आइडेंटिटी के। देयर आर 4 डिफरेंट स्टेट्स: आइडेंटिटी डिफ्यूजन, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, आइडेंटिटी मोरेटोरियम और आइडेंटिटी अचीवमेंट। जहां कमिटमेंट है और एक्सप्लोरेशन, बिल्कुल कमिटमेंट भी नहीं होता और एक्सप्लोरेशन भी नहीं होता, वहां आइडेंटिटी डिफ्यूजन की स्टेट हम मानते हैं। जैसे एक 16 साल का बच्चा है, वो घर से जाता है, घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को उसी तरीके से कर रहा है जो 12 साल का बच्चा नहीं कर रहा है, जो 12 साल से करता आ रहा है।
मतलब वो जब 12 साल का था, तो अपने जो और पीयर्स हैं उनको इग्नोर कर रहा है वो टोटली, मतलब वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, उनका किस तरीके से चलता है, किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, उसको इग्नोर करते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी डिफ्यूजन में है ना, वो एक्सप्लोर करना चाहता है, वो ना वो कमिटमेंट सेट करना चाहता है। वहीं हम जब एक्सप्लोर जो आइडेंटिटी फोरक्लोजर की बात करते हैं, तो इससे इसका एक बहुत ही उम्दा एग्जांपल अगर होगा तो आप सभी ने 3 इडियट्स मूवी जरूर देखी होगी सर, जिसमें हमारे पास एक कैरेक्टर हुआ करता था फरहान अख्तर, जहाँ पे एक्चुअल में सोसाइटी ने, उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर इम्पोज किया था कि इज गोइंग टू बी द इंजीनियर। तो वो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को लेके बहुत ज्यादा कमिटेड था, तो वो कर तो रहा था, बट वाज नॉट एक्सप्लोर्ड much about more professions. He know about that he wanted to be a wildlife photographer, but वो committed था एक आइडेंटिटी को लेके। तो वो उस पर्टिकुलर चीज में हम लोग देखते हैं अक्सर लोग खुश नहीं हो पाते उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जिसमें वो है। वहीं हम देखते हैं कि आइडेंटिटी मॉरिटोरियम की जब मैं बात करता हूँ, मैं खुद का एग्जांपल देना चाहूंगा, जिसमें मैंने जहाँ पे कमिटमेंट नहीं सेट हो पाता बट एक्सप्लोरेशन बहुत हो रहा होता है। जैसे पहले मैंने साइंस बैकग्राउंड को अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, बट साइंस में मेरा रुझान नहीं रहा था, तो कॉमर्स में आया। कॉमर्स से रुझान खत्म हुआ जब मुझे लगा कि इस पे मेरा कमिटमेंट सेट नहीं हो रहा था, देन आई कम टू द साइकोलॉजी। तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन कई बार होता है बट कमिटमेंट सेट नहीं हो पाता। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आइडेंटिटी अचीवमेंट की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे हमारा एक्चुअल में हमारा एक्सप्लोरेशन भी पूरी तरीके से हो जाता है और कमिटमेंट भी सेट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मी नाउ आई कैन बी दैट माय आइडेंटिटी इज अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर। तो वो मेरा कमिटमेंट भी एक साइड हो गया है कि इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में मैं कमिटेड हो चुका हूँ। सर दूसरी चीज, जब हम इन आइडेंटिटी स्टेट्स की बात करते हैं तो आइडेंटिटी क्यों स्ट्रेंथन करना जरूरी है, वो इसलिए भी है सर क्योंकि कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट सेट करने में बहुत हमारी मदद करता है। और जब हम पहली आइडेंटिटी स्टेट की बात करते हैं, आइडेंटिटी डिफ्यूजन है, वहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है। वेयरएज जब हम आइडेंटिटी अचीवमेंट की बात करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा मतलब हम देखना मिलता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू स्ट्रेंथन द आइडेंटिटी। तो लर्न टू प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। सेल्फ कंपैशन यानी अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सर हमारे अंदर से चेंज बदलाव की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले हमारे अंदर जो है चीजें हैं यानी हमारी वीकनेसेस, हमारी स्ट्रेंथ को जानना बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चे करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनको हम बताते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, आपका जो एप्टीट्यूड है वो ऐसा है, इसके बेसिस पे आपकी जो करियर है इस तरीके से आप ले सकते हो। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि बच्चे खुद अपने अंदर जाके वो जानने की कोशिश करें कि एक्चुअल में वो किस चीज में अच्छे, उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है, और उस तरीके इसके लिए हम बहुत ही सिंपल सी चीजें, अगर हम प्रैक्टिस करने की बात करें तो शॉर्ट एनालिसिस एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। इसके लिए वो प्रैक्टिस कर सकते हैं शॉर्ट एनालिसिस के माध्यम से, जहां स्ट्रेंथ है, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में वो जान सकते हैं। एक ग्रेटिट्यूड लेटर लिख सकते हैं अपने आप को रेगुलर बेसिस पे, जहाँ पे वो अपने आप को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं और अपने आप की आइडेंटिटी को स्ट्रेंथ करते हैं। द वे आई एम राइट। एक्सेप्ट द फ्लॉज एंड लिमिटेशन, जो भी हमारी वीकनेस है उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, और उसको किस तरीके से उस पर किस तरीके से हम उस पर काम कर सकते हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है। आपको उस पर्टिकुलर चीज को करना चाहिए और उस चीज में स्किलफुल होना बहुत जरूरी है, जिस चीज को आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो। फॉर एग्जांपल सर कि अगर किसी इंसान को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है तो ही कैन ज्वाइन द एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर सकता है, वेरियस हो सकते हैं। स्कूल में क्रिकेट टीम ज्वाइन कर सकता है, वहां पे वो अपने आप को प्रैक्टिस करके और स्किलफुल बना सकता है। निखिल जी प्लीज प्रिसाइज, प्लीज प्रिसाइज। यस सर, प्लीज। यस सर। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि सर किस तरीके से डिक्रीज हो सकता है रोल कंफ्यूजन। तो सेम अगर हमारी आइडेंटिटी जो है स्ट्रेंथन होगी तो किसी तरीके से हमारा रोल कंफ्यूजन जो है वो डिक्रीज होगा। हम कमिटेड हो सकते हैं हमारे गोल्स के प्रति और वो जो हम कर रहे हैं, और डेफिनेटली जो हमारा इंटरेस्ट होगा उसकी हम जो ज्यादा से ज्यादा अगर हम प्रैक्टिस करते हैं उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो यहाँ हमारा रोल जो कंफ्यूजन है वो कम रहेगा, कम होता जाएगा, इसी तरीके से श्रिंक हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक लंबी प्रोसेस है, प्रैक्टिस है। जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे आपका प्रॉफिट होता जाएगा। आप सब हमारे साथ जुड़े, मैं सबसे पहले डॉक्टर करियप्पा को थैंक यू कहूँगा। सर आप हमारे साथ जुड़े एंड यू हैव प्रिपेयर्ड दिस वंडरफुल कंटेंट एंड टू सेलेक्ट दिस टॉपिक फॉर द एडोलेसेंट्स। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस सेशन। Thank you, sir. Thank you very much. Mr. Nikhil, thank you very much for your time and experiences you have shared with us. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. हमारा ये सहयोग सेशन और हमारी आज की जो प्रस्तुतियां हैं वो यहीं समाप्त होती हैं। कल सुबह हम फिर हाजिर होंगे ठीक 8 बजे योग शक्ति का पहला सत्र लेकर। मैं आपसे अपनी टीम के साथ विदा लूँगा। जुड़े रहिए PM eVidya चैनल के साथ। नमस्कार।